There are no secrets about the world of nature. There are secrets about the thoughts and intentions of men. So said J. Robert Oppenheimer. And Oppenheimer, as you would all know, is a recently released film based on J. Robert Oppenheimer. It strongly references World War II. The recently released film Bawal is also, it has references to the World War. And the reason for choosing this topic is to tell you what you can learn about the world around you, not just global affairs, but also your immediate surroundings, and to be able to form an informed opinion about things rather than be influenced by propaganda and such like. Also, it's important from an exam perspective because you will be able to answer questions about not just history but also international relations. As you go along the quiz, you will find, or I'd encourage you to find parallels with institutions that are there in the present, as compared to what was there, in the aftermath of the First World War and how all that came about. So it will help you form that comprehensive base to answer those questions. So, without much ado, let's begin. The first question: what is considered the tipping point leading to the First World War? Your options are the assassination of Otto von Bismarck, the assassination of Francis Ferdinand, the assassination of de Klaas, and none of the above. Yes, regarding the pronunciations, you must remember that some of the names which are in German, they have a distinct pronunciation. The words which are in French, I cannot claim much mastery over them, but I've tried to pronounce them as they ought to be. Of course, there might be mistakes there. So yeah, moving back to the question, the right answer here is the assassination of Francis Ferdinand. And just to tell you a bit about how this became a tipping point. So primarily Francis Ferdinand, he was the heir apparent to the Habsburg throne, and he was the Austrian Archduke at that time. And he had gone to Sarajevo, which was the capital city of recently annexed Bosnia. So this was part of the Austro-Hungarian Empire at that time. But Serbian nationalism was on the rise, and there was a Bosnian Serb nationalist called Gavrilo Princip, who in fact gave way to this assassination. And at that time, as whenever you get down to reading about the First World War, you will find that there was rising nationalism, imperialism was also there, but mostly there was also a sort of militarism that was building up, and alliances of all sorts. And that is where things got complicated. When this assassination took place, the controversy or the conflict perhaps would have been local. It would have been between Austria-Hungary and Serbia, but that was not to be, because each of them had their own alliances that had been formed, and most of the European powers wanted to then step in and show their might and possibly also capitalize, which is of course also one of the traits of man, to capitalize on misfortunes, and that's exactly what happened here. The second question: who was part of the Triple Alliance? So we were just talking about alliances, and we'll be talking about two major ones. The first is the Triple Alliance, and the second one is the Triple Entente. So this Triple Alliance, the options were Germany, Britain, France, Austria, Germany, Russia, Italy, and Germany, Austria, Hungary, and Italy. The correct answer is D. And so this Triple Alliance, as you can see now, these were the so-called countries which were militarily acting very strong, and they wanted to acquire more and more territory, and all their claims on other people's colonies and territories were what was giving rise, these common interests were giving rise to the Triple Alliance. Question number 3: who was part of the Triple Entente? Your options here: Germany, Britain, France cannot be. We've already discussed about the Triple Alliance. Germany, Turkey, Italy, again not. Britain, France, and Russia. And D, none of the above. The correct answer here is C, Britain, France, and Russia. And Entente, basically it means a sort of understanding
among nations that they would protect each other when things get rough. That's just very simply put. तो अगर कोई भी देश जो है उसको थ्रेट होगा किसी और देश से या वॉर का समय आएगा, तो फिर जो है ये अलायंस के सारे सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म हुई. The next question is Morocco was a treasured colony of which European nation? Options: Belgium, France, Britain and Germany. Now it's very important sometimes when we read about modern Indian history, तो एक दिमाग में ये फॉर्म हो जाता है कि yes, Britain had a lot of colonies. Of course they did, but there were other European nations as well who were protecting and vigorously protecting their own colonies in various parts of the world. And so Morocco in Africa was one of them, and here France was the one which was the European nation, whose colony it was. And when I say treasured colony, what we mean is that there were various other European powers who wanted to exert influence on Morocco and acquire the territory of Morocco and other colonies, which was also giving rise to underlying currents of tension among these. So there were a lot of colonial rivalries in Africa which were stemming and forming these tensions. Question number 5, what is the crux of the theory of evolution? Now, what is this question doing here in the middle of nowhere when we're talking about World War I? And this brings me back to the quote that we, quoted at the beginning of today's lesson. The theory of evolution, I'll quickly first go on to the answer. Your options are gradual change, survival of the fittest, change is the only constant, none of the above. The correct answer is survival of the fittest. And this theory of evolution was a product of Charles Darwin's study. And it simply means that, at that point in time when all these European nations and their allies and their enemies were colluding and forming all kinds of plans against each other, each of them had in the back of their mind the idea that there is survival of the fittest, and that is precisely what they were trying to do. So they were trying to develop all kinds of armaments. They were trying to enlist as many people as possible into armies so that they could attack each other and gain as much territory as possible. But what you need to remember at the end of the day is that aggression also has limits. Aggression also comes at a cost. All these countries also suffered because, see, this was the first time that something was happening on this scale. No one was prepared for the aftermath or for what was going to happen in between. So there was a lot of logjam, as you will soon find out, which finally led to different international institutions being formed, क्योंकि इस रात की कोई सुबह नहीं वाला सिचुएशन हो रहा था और किसी भी कंट्री को समझ नहीं आ रहा था कि अभी ख़त्म कहाँ जाके होगा, शुरू तो हो गया है. तो इसके चलते जो है वर्ल्ड वॉर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा उसके रैमिफिकेशंस हुए, न केवल आई थिंक यूरोप में बट पूरा वर्ल्ड ओवर. और आज तक जब आप अब इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि जो कंट्रीज़ उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, how they suffered and how it really became difficult to sort of go back to the position that they were in. The sixth question, the entry of Germany into which regional market flared tensions with Britain? So I was just telling you about the fact that it was not just about military, right? When you talk about survival of the fittest, it was not just about aggression helping you or military power helping you, but you needed to remember. एंड एज़ you will find out कि जैसे जब हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करेंगे कि मतलब US और ये सब क्यों सुपर पावर्स होते गए, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और जो डिप्लीशन था इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो वहाँ पे बहुत कम हुआ ड्यू टू देयर लेट इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर. मीनवाइल यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरोपियन नेशंस वर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर ऑल्सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स. तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज़ साउथ अमेरिका. और ये एक बहुत ही प्राइज्ड आप कह सकते हैं ट्रेड था. ब्रिटेन का मोनोपोली ऑफ ट्रेड हुआ करता था साउथ अमेरिका में, और जब जर्मन बिजनेसमैन वहाँ पे आने लगे तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई. Question 7, Bosnia and Herzegovina had been annexed by options
Turkey, Germany, Serbia, none of the above. None of the above is the correct answer. ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर था जिन्होंने इसको अनेक्स किया था, और जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, जब सर्बियन नेशनलिज्म वाज ऑन द राइज तो इनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश हुई, एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग केम टू अ बॉयल इन यूरोप. Question 8. What was a U-boat used in World War I? Now this is just a factual question. तो इसका सही जवाब सबमरीन है. और थ्रू आउट आप वर्ल्ड वॉर में देखेंगे एक और रीज़न कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डिप्लीशन का ये भी था कि आज जैसे हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, बट उस टाइम ये हो गया था कि वेलफेयर मेजर्स तो बाद में लिए जाएंगे. फर्स्ट वी हैव टू स्ट्रेंथन आर मिलिट्री रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, एंड पहले हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली. तो इस तरह के नए नए चीज़ें ईजाद की जाती थी और कोशिश होती थी कि भाई टू बेसिकली वन अप द अदर कंट्री की हु विल डेवलप अ बेटर वेपन. तो वो चीज़ उस टाइम पे चल रही थी. साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर हम जर्मनी की बात करें, क्वेश्चन 9 टॉक्स अबाउट जर्मनी लेइंग डाउन आर्म्स. यहाँ पे आपको याद ये रखना है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट कंट्रीज़ हैड नॉट एंटिसिपेटेड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये पहली बार इस स्केल पे हो रहा था. तो जैसे जर्मनी ने उस टाइम एक श्लीफन प्लान सोचा था कि हम इस प्लान के तहत जो है वी विल अटैक फ्रांस, और उसके बाद जो है फिर हम रशिया पे अटैक करेंगे. और वो फ्रांस गए किस रास्ते, वो गए न्यूट्रल बेल्जियम के रास्ते. तो बेल्जियम जो था वो एक न्यूट्रल देश था, उनका एक तरह से उस वॉर से कोई लेना देना नहीं था. बट फिर हुआ यूं कि क्योंकि ये लोग बेल्जियम के थ्रू गए और बेल्जियम एक तरह से डिस्टर्ब हुआ, तो फिर ब्रिटेन ऑल्सो जम्प्ड इनटू द वॉर, एंड दे सेड कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज दैट वी हैव एन अलायंस विद. और श्लीफन प्लान में जर्मनी ने एंटिसिपेट किया था एक टाइमलाइन कि पहले हम फ्रांस को कॉन्कर कर लेंगे, फिर हम रशिया पे धावा बोल देंगे. बट जैसा कि हम देखा है हमने इनफैक्ट इन हिस्ट्री, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, and one cannot anticipate or be very mathematically precise about such things. If you watch the film Oppenheimer, you yourself will also find out that there are only so many variables that are in your control, and the rest is actually just in a state of flux all the time, and something that you cannot control at all, and such is life itself. And that's exactly what happened in World War I as well, और इसीलिए प्लान बहुत ख़ास कामयाब नहीं रहा. तो क्वेश्चन 9 ये कहता है कि जर्मनी ने 18 नवंबर 1918 को आर्म्स ले डाउन कर दिए. उन्होंने कहा कि ठीक है, विल एक्सेप्ट पीस. नाउ हु वाज द मैन बिहाइंड दीज? वुड्रो विल्सन was the one who had actually decided on 14 points, और इनके ऊपर डिस्कशन हुआ. फिर जर्मनी ने कहा ठीक है. और जर्मनी ने क्यों ठीक है कहा, तो आपको मैंने रीजंस कुछ कुछ बताए कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी. ऐसा नहीं था कि नेशंस वर जस्ट, दे हैड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पीपल, ट्रूप्स एंड रिसोर्सेज. सो एवरीवन वाज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड ऑफ इट एंड रियलाइजिंग कि कुछ होने नहीं वाला है इसका. और यूएस जब वॉर में एंटर किया तो वो लोग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दे हैड more supplies at that time because they had entered, of course वो बाद में एंटर किए, तो उनके पास काफ़ी रिजर्व था जो कि ये वाले कंट्रीज़ का डिप्लीट हो चुका था उस टाइम तक. तो इन 14 पॉइंट्स की बेसिस पे जर्मनी कहा कि ठीक है, वील ऑल्सो ले डाउन आर्म्स. अब ये 14 पॉइंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि इनमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा इक्वल ट्रीटमेंट की बात थी. ये था कि हाँ, विल ऑल रीच एन अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे डिसआर्ममेंट होगा, सारी कंट्रीज़ का होगा, ताकि आगे से ये सिचुएशन ही ना आए. बट एज ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, तो जाहिर है कि ये डिसआर्ममेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा प्रोमिसेस ही रह गए. Now question 10, the Paris Peace Conference was a key moment. Which of the following representative is correctly matched with his country? Now you need to, in fact, if you read into this question, it's a pity that we've had to use with his country. It could easily have also been her, but that was the story back then कि ज़्यादातर आप देखेंगे that it was a lot of male members at the table who were taking all these decisions, and
लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्जेस क्लेमेंस्यू, इसको अलग से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब केवल बी है। और लॉर्ड जॉर्ज जो थे वो ब्रिटेन के थे। काफ़ी और रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे अलग अलग देशों के पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहाँ पे भी एक फुल अग्रीमेंट होना काफ़ी मुश्किल प्रूव किया, जो अभी तक चल रहा है, और इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 11 इज मैच द ट्रीटी विद द कंट्री। ऑप्शंस ट्रीटी ऑफ वर्साई, फिर ट्रीटी ऑफ सेव्र, ट्रीटी ऑफ लोजान और लोजेन। तो इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के साथ था और सेव्र और लोजेन जो हैं वो टर्की के साथ थे। तो ये सिंपली आपको बताता है, ये सारी ट्रीटीज़ अलग अलग ट्रीटीज़ थे जो पीस ट्रीटी वर्ल्ड वॉर 1 के साइन हुए थे इन देशों के साथ। कुछ कुछ कंडीशंस ले डाउन की गई थी कि आपको ये करना होगा, वो करना होगा, और अकॉर्डिंगली हम इस वॉर को फिर ख़त्म मानेंगे। वी विल नो लॉन्गर कंसिडर यू एज एन अग्रेसर। Question 12. As part of the Treaty of Versailles, Germany had to abolish conscription, lose all colonies in Africa. Now both these are correct. Conscription का मतलब ये होता था compulsory military service. तो जैसे आप देखेंगे आज भी फॉर इंस्टेंस सिंगापुर में people of a certain age have to get enrolled in the military, and it's called national service, so they have to render that service, also get trained for some years in the military. तो काफ़ी देश उस टाइम पे इस पॉलिसी को अपना रहे थे, बिकॉज लाइक आई सेड देयर वाज एन आर्म्स रेस, एवरीवन वांटेड टू गेट अहेड ऑफ ईच अदर। तो बट जर्मनी को ये कह दिया गया कि भाई देखिए, आप ये ट्रेनिंग तो अब नहीं कर सकते हैं कंपल्सरीली फॉर योर पीपल। They lost all their colonies, not just in Africa but also in Asia. तो इससे भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और they did not like this fact. Aside from this, they were also stripped of large chunks of their territory. तो अब जैसे जो सार रीजन था वो पूरा इंटरनेशनल कमीशन के कंट्रोल में आ गया अगले 15 साल के लिए, और फ्रांस ने कहा दैट वी गोइंग टू माइन कोल फॉर आवर बेनिफिट फ्रॉम हियर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या होना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब जर्मनी से तो करवाई गई जब आप देखेंगे, और उनसे कहा गया कि आपको ये करना है। जैसे उन्हें $5 बिलियन का रेपरेशन एक तरह से देना था कंट्रीज़ को फॉर ऑल द लॉस दैट दे हैड कॉज्ड, एंड टू एक्सेप्ट द वॉर गिल्ट। बट इसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए फिर उस कंट्री पे, बिकॉज सी ऑल दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑन पेपर, बट व्हेन इट एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू मेकिंग गुड ऑन दोज प्रोमिसेस, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू हैव रेपरकशंस फॉर दैट कंट्री एज वेल। और इसी ग्रोइंग डिसकंटेंट पे फिर आगे जाके आप देखेंगे कि कैपिटलाइज किया गया बाय नाजीज एट्सेट्रा। क्वेश्चन 13 है, द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वॉज प्रोवाइडेड इन किस लेजिस्लेशन या स्टैट्यूट में? इसका सही जवाब है द कवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है 1921 में फॉर्म हुआ। अब मैंने आपको शुरू में बताया था दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ पैरेलल्स, सो नाउ व्हाट आईड लाइक यू टू डू इज़ टू गो बैक एंड रीड अबाउट हाउ इफेक्टिव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस and the international arbitration tribunals are, और आप साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में पढ़िएगा एंड फाइंड आउट अबाउट वेदर those decisions are actually being implemented by the concerned countries, or are they still wielding a free hand. And that is exactly why I had told you that this will help you understand and put things in context. Question 14, the main institutions in the League of Nations were, तो इसमें सारे ही सही हैं, असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। इस सवाल का अगेन पर्पज़ ये है कि अब आप यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में पढ़िए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए, एंड कॉन्ट्रास्ट दैट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में भी आप जानेंगे कि जो काउंसिल जब फॉर्म हुआ था तो उसमें भी कुछ एक परमानेंट मेंबर्स थे और कुछ एक नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, विच इज़ quite similar to the Security Council in the United Nations today. And you would know that there has been an ongoing tussle and an ongoing agenda of sorts to reform the United Nations Security Council and to include more permanent members on it. क्योंकि जैसा कि तब भी हो रहा था, there were just a few countries who perhaps
वर कॉलिंग द शॉट्स, और उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट को भी देख रही थी. तो इट्स नॉट लाइक कि वो इंटरनेशनल बॉडी का हिस्सा हो गए थे तो वो बस ग्लोबल इंटरेस्ट ही देखेंगे. इट रिमेन्ड अ वेरी nationalistic approach a lot of times, which hindered these institutions. The last question: which country was conspicuous by its absence from the League of Nations? This is very very important, और आप काफ़ी सरप्राइज होंगे जान के. इसका आंसर डी है, the USA. Even though Woodrow Wilson was the brains behind this and he tried to really push it ahead कि सारे लोग इसका पार्ट हो जाएं, but US में लेजिस्लेचर ने इसे अप्रूव नहीं किया, इसके कवेनेंट को, जिसके चलते कि यूएस ही इसका हिस्सा नहीं हुआ. एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स फिर इसके क्या इम्पैक्ट हुआ आगे जाके वो हम अगले लेसन में देखेंगे. सो होपफुली दिस हेल्प्ड यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.